तो आज जो हमें सेक्शन स्टार्ट करना है वो टेक्स्ट टू का सेक्शन 4 है। एंड इसके बाद हम उसका करस्पॉन्डिंग मेन सूत्र भी पढ़ेंगे। अ, बंते जी, आप कुछ इनिशियली नहीं, आई थिंक इट्स गुड इनफ। हम लोग एनलाइटनमेंट तक, बोधि तक पहुंच गए हैं। और बोधि के पहुंचने के कुछ हमने वो देखे, जो प्री रिक्विजिट स्टेप्स थे पर्टिकुलरली, कि किस प्रकार से एक मिस्टिकल प्रोसेस, सुत्तों में कम से कम एक मिस्टिकल प्रोसेस इसको ना बताते हुए एक विवेचनात्मक, एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस बताया है, जिसके माध्यम से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्लियर हुआ, एंड दैट देन ब्रिंग्स अबाउट बोधि। सो दैट्स वेयर वी आर। और मेरे ख्याल से आज जो है, हम बोधि के तुरंत बाद जो उनके मन में विडंबना है, विच इज इटसेल्फ क्वाइट फैसिनेटिंग, उसको अब देखेंगे। सो प्लीज गो हेड, दीपक। थैंक यू। थैंक यू। Deepak ji, could you please be very loud? Slightly more than what you are. ओके, इज इट बेटर नाउ? Yes, yes, thank you. Text 2.4 resumes the narrative of text 3.1, which I have divided by splicing into alternative versions of Bodhisattva's quest for path to enlightenment. We now join the Buddha immediately after his enlightenment as he ponders the weighty question whether to attempt to share his realization with the world. Just at this point, in the midst of text that so far has been appeared so convincingly naturalistic, a deity named Brahma Sampati descends from the heavens to plead with the Buddha to wander forth and teach Dhamma for the benefit of those with little dust in their eyes. Should this scene be interpreted literally or as a symbolic enhancement of an internal drama taking place in Buddha's mind? It is hard to give a definitive answer to this question. Perhaps the scene could be understood as occurring at both levels at once. In an event, Brahma's appearance at this point marks a shift from the realism that colors the earlier part of the sutta back towards the mystical symbolic mode. The transition again undergoes the cosmic significance of Buddha's enlightenment and his future mission as a teacher. Brahma's appeal eventually prevails and Buddha agrees to teach. He chooses as the first recipients of teaching the 5 ascetics who had attended on him during his years of ascetic practices. The narrative culminates in a brief statement that the Buddha instructed them in such a way that they all attained the deathless Nibbana for themselves. However, it gives no indication of specific teaching that the Buddha imparted to them when he first met them after his enlightenment. That teaching of a discourse known first discourse itself, the known as the setting of motion of the wheel of the Dhamma. तो इसमें जैसे बंटी जी ने शुरू में बताया कि अब भगवान की एनलाइटमेंट के बाद का पार्ट आता है जिसमें ब्रह्मा संपत्ति भगवान से आके रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनकी आंखों में लिल डस्ट है, आप उनको धम्म सिखाइए।
इसके बाद भिक्खु बोधि शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दो ऑप्शन है, या वो कह रहे हैं कि या तो हो सकता है कि उस समय ब्रह्मा संपत्ति आए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी, या ये भगवान के मन में उस समय ये सब बातें चल रही थी, और शायद अ, दोनों ही बातें हों। बट जो भी हुआ उसमें भगवान ने एग्री करा कि वो जगह जगह जाके एज एसेटिक टीचिंग्स देंगे। और इसके बाद उनकी पहली जो 5 डिसाइपल्स हैं, उनकी बात आती है, जो उनके साथ पहले थे जब वो एसेटिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जिनके भगवान की जब भगवान ने उनको टीचिंग दी तो उसके बाद उनको डेथलेस निब्बान की प्राप्ति हुई। इसके बाद जो आई थिंक एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, द फर्स्ट डिस्कोर्स इट्स sorry. However, it gives no indication of the specific teaching that the Buddha imparted to them when he first met after his enlightenment. ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, आई डोंट नो मोदी ने किस रेफरेंस में दी है, बट हमारी नॉलेज में जनरली हम मान के चलते हैं कि जो पहला डिस्कोर्स था वो उन 5 एसेटिक्स को ही दिया गया था। Okay. We can now go to the in section. Number 4, the decision to teach. I considered this Dhamma that I have attained is profound, hard to see, hard to understand, peaceful and sublime, unattainable by the mere reasoning, subtle to be experienced by the wise. But this population delights in attachments, takes delights in attachment, rejoices in attachments. It is hard for such a population to see this truth, namely the specific conditionality, dependent origination. And it is hard to see this truth, namely the stilling of all formations, the relinquishing of all acquisitions, the destruction of all craving, dispassion, cessation, nibbana. If I were to teach Dhamma, others would not understand me, and that would be weary and troublesome for me. Thereupon, there came to me in the spontaneous these stanzas never heard before. Enough with teaching the Dhamma, that even I have found hard to reach, for it will never be perceived by those who live in lust and hate. Those died in lust, wrapped in darkness, will never discern this absolute Dhamma, which goes against the worldly stream, subtle, deep, and difficult to see. Considering thus, my mind inclined to inaction rather than to teaching the Dhamma. Then monks, Brahma Sampati knew with his mind the thought in my mind, and he considered, the world will be lost, the world will perish, since the mind of Tathagata, the Arhat, the perfectly enlightened one, inclines to inaction rather than to teaching Dhamma. Then, just as quickly as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm, the Brahma Sampati vanished in the Brahma world and appeared before me. He arranged his upper robe on the one shoulder and extending his hands in levitial situation,
reverential situation towards me, said, Venerable Sir, let the Blessed One teach the Dhamma, let the Sublime One teach the Dhamma. There are beings with little dust in their eyes who are perishing through not teaching the Dhamma. There will be those who will understand the Dhamma. The Brahma Sampati spoke thus, and he said further, In the Magda that there have in Magda there have appeared till now impure teachings devised by those still stained. Open the door to deathless. Let them hear the Dhamma the stainless one has found. Just as one who stands on a mountain peak can see below the people all around, so, O wise one, all-seeing sage, ascend the place of the Dhamma. Let the sorrowless one survey the human bread, engulfed in sorrow, overcome by birth and age. Arise, victorious hero, Carven leader, deathless one, and the wanderer in the world. Let the blessed one teach the Dhamma. There will be those who will understand. तो एक बार इतना कर लेते हैं, and then we'll come to the next part. तो एनलाइटमेंट के बाद अब भगवान यही सोच रहे हैं कि जो धर्म उन्होंने पाया है वो काफी गहरा है, प्रोफाउंड है, अ, किसी को आसानी से समझ में नहीं आएगा, किसी के लिए आसानी से देखना भी मुश्किल है, काफी पीसफुल है, काफी सब्लाइम है। खाली रीजनिंग से उसको अटेन नहीं किया जा सकता, ये खाली एक्सपीरियंस करा जा सकता है उन वाइज लोगों से। वो लोग जो कि अटैचमेंट्स में उनको डिलाइट होता है, मजा आता है, और जो अटैचमेंट्स में ही खुश रहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है ये समझना बहुत मुश्किल है। उनके लिए समझना मुश्किल है कि किस तरह से अपनी ये जो फॉर्मेशन है उनको अपनी जो फॉर्मेशन है उनको शांत करना है, जो उन्होंने सब इकट्ठा करा हुआ है कैसे उसको छोड़ना है, एंड किस तरह से उनको अपनी क्रेविंग, डिस्पैशन और क्रेविंग का डिस्पैशन करके, सॉरी, क्रेविंग का डिस्ट्रक्शन करके डिस्पैशन और सेसेशन और डिमांड की तरफ बढ़े। और फिर भगवान ने उनके मन में ये आया कि अगर ये धम्मा वो औरों को सिखाएंगे तो ये उनके लिए काफी कठिनाई का कारण बनेगा। उसके बाद उनके मन में ये सहजा आया कि जो आई थिंक ये पोयम है, एसेंशली कि जो उन्होंने दम पाया है वो बहुत आसानी से नहीं पाया जा सकता। उनके लिए जिनके मन में अभी भी लस्ट और हेट है, तो ये जो धम है ये एक तरह से वर्ल्डली स्ट्रीम में उल्टा चलने के से कंपेयर करा रहे हैं। तो इसके बाद ब्रह्मा संपत्ति ने जब ये देखा कि तथागत के मन में ऐसे बातें आई हैं, तो उनको लगा कि ये संसार जो है एक समाप्त हो जाएगा अगर तथागत ऐसे सोचेंगे,
तो उसी समय वो भगवान के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उसके बाद उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि जिनकी आंखों में पीली डस्ट है, आप उनको दम सिखाइए। उसके बाद उन्होंने यही बोला कि मगध के अंदर ऐसे बहुत लोग आए हैं जो कि जिन्होंने टीचिंग दी है, बट उनकी टीचिंग जो है वो इम्प्योर है। आप जो है हमें अमृत का रास्ता दिखाएं और उस धम हमें वो शुद्ध धम हमें दें। जिस तरीके से कोई एक अ, पहाड़ की चोटी पे खड़ा होके सब जगह नजर घुमा के देख सकता है, उसी तरह आप उस धम के ऊंचे स्थान पे जाके जो लोग आप सर्वे कर सकते हैं पूरे संसार का, कि जो लोग संसार में सौरव बर्थ और ओल्ड एज से ओवरकम है। उसके बाद वो भगवान से वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उठें, आप हमारी लीडर हैं और आप हमें अब संसार में धर्म सिखाएं। संसार में ऐसे जरूर व्यक्ति होंगे जो इसको सीख पाएंगे। Then I listened to Brahma's pleading, and out of compassion for beings, I surveyed the world with the eye of a Buddha. Surveying the world with the eye of the Buddha, I saw beings with little dust in their eyes and with much dust in their eyes, with keen faculties and with dull faculties, with good faculties and with bad faculties, easy to teach and hard to teach, and some who dwelled seeing fear and blame in others in the other world, with some who dwelt seeing the fear and blame in other world. Just as in pond of blue or red with or white lotuses, some lotuses are born and grow in water, thrive, immerse in water without rising out of it, and some other lotuses that are born in and grow in water rest on the water surface, and some other lotuses that are born and grow in water rise out of the water and stand clear, unwetted by it. So too, surveying the world with the eye of Buddha, I saw beings with little dust in their eyes, with much dust in their eyes, with keen faculties and with dull faculties, with good faculties and with bad faculties, easy to teach and hard to teach, some who dwelt seeing fear and blame in the world. Then I replied to Brahma Sampati in stanzas. Open for them the door to the deathless. Let those who let those with ears now show their faith, thinking it would be troublesome, O Brahma, I did not speak the Dhamma subtle and sublime. Then the Brahma Sampati thought the Blessed One has consented to my request that he teach the Dhamma. After paying homage to me, keeping me on the right, he thereupon departed at once. I considered thus, to whom should I first teach the Dhamma? Who will understand the Dhamma quickly? It then occurred to me, Alara Kalama is wise, intelligent, and discerning. He has long had little dust in eyes. Suppose I taught the Dhamma first to Alara Kalama. He will understand it quickly. Then deities approached me and said, Venerable Sir, Alara Kalama died 7 days ago. And the knowledge and vision arose in me. Alara Kalama died 7 days ago. I thought, Alara Kalama loss is a great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly. I considered too, to whom should I first teach the Dhamma? Who will understand the Dhamma quickly? It then occurred to me, Uddak Ramputra is wise, intelligent, discerning. He has long had little dust in his eyes. Suppose I taught the Dhamma first to Uddak Ramputra.
He will understand it quickly. Then deities approached me and said, Venerable Sir, Uddak Ramputta died last night, and the knowledge and the vision arose in me. Uddak Ramputta died last night. I thought Uddak Ramputta's loss is great one. If he had heard this Dhamma, he would have understood it quickly. I considered thus, to whom should I first teach Dhamma? Who will understand the Dhamma quickly? It then occurred to me the monks of the group of the five who attended upon me while I was engaged in my striving were very helpful. Suppose I taught Dhamma first to them, then I thought, where are those group of five monks now? And with a divine eye which is purified and surpassed the human, I saw that they were living in Banaras in the deer park at Isipatan. Then monks, when I had stayed at Uruvela as long as I choose, I set out to wander. Deepak, maybe we can stop because now there is a new thing starting, and there is quite some richness already. So maybe we just consider that. Yes. So I think जब ब्रह्म संपत्ति ने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि तो उसके बाद जब भगवान ने इस संसार में अपने नजरों से देखा, तो उन्होंने देखा कि जरा लोग जिनकी आंखों में कोई कम डस्ट है, जो कि दम आसानी से समझ सकते हैं, और ऐसे लोग हैं जो जिनकी आंखों में डस्ट ज्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कीन फैकल्टीज हैं, जो धर्म के बात पे काफी आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो काफी जिनकी डल फैकल्टीज हैं, जो कि अभी भी भोग विलास में व्यक्त है। ऐसे लोग हैं जिनमें काफी गुड क्वालिटीज हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें काफी बैड क्वालिटीज हैं। ऐसे लोग हैं जिनको धर्म आसानी से सिखाया जा सकता है। ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे में फियर और ब्लेम ही फैला रहे हैं। फिर यहाँ पे एक सिंबली में आता है कि जिस तरीके से एक पॉन्ड के अंदर अलग अलग तरह के लोटस हो सकते हैं, कि कुछ लोटस जो हैं वो पानी की सतह से ऊपर ही नहीं उठते, पानी की सतह के नीचे ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और कुछ लोटस हैं जो खाली सतह तक ही आ पाते हैं, और कुछ लोटस जो हैं वो सतह से ऊपर उठ के पूरी अच्छी तरह खिल सकते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने जब सर्वे करा, तो इस सिंबली की तरह देखा कि वो व्यक्ति जो सतह के वो व्यक्ति जो जिनकी आंखों में डस्ट कम है, जिनकी कीन फैकल्टीज हैं, वो उस तरीके से है जो एक जो लोटस जो सतह से पूरी ऊपर आके खिल सकता है। तो इसके बाद भगवान ने ब्रह्म संपत्ति की बात को माना कि उन उन सब लोगों के लिए जिनकी फैकल्टीज कीन है और जो जिनकी आंखों में कम डस्ट है, उनके लिए जो ये अमृतों का द्वार है वो खुला है। एंड जिनमें श्रद्धा है वो उस रास्ते को पाए। तो उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा की बात को मान लिया। उसके बाद जब ब्रह्मा चले गए, तो भगवान के मन में ये विचार आया कि वो किसको अपनी पहली टीचिंग दें। तो भगवान ने सबसे पहले अपने दो पुराने टीचर्स के बारे में सोचा, जिस समय वो बोधिसत्व थे। तो पहला टीचर अलार्म कलाम के बारे में जब उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि उनकी मृत्यु जो थी वो 7 दिन पहले ही हो चुकी है। फिर उन्होंने उद्धव रामपुत्र के बारे में सोचा कि वो भी ऐसे हैं जो आसानी से सीख सकते हैं। तो उनको पता चला कि उनकी मृत्यु भी एक दिन पहले ही हुई है। उसके बाद भगवान ने
को याद आया कि उनके वो एनलाइटमेंट से पहले के वो 5 साथी जो उनको अटेंड कर रहे थे जब वो काफी ज्ञान साधना कर रहे थे, तो उसके बाद भगवान ने देखा कि उनके वो 5 पुराने साथी वो बनारस में डियर पार्क में एसी पदान में है। तो इसके बाद हम आगे रीड करते हैं। बिफोर वी डू दैट, मे बी जो हमने अब तक देखा है, वी कैन वेट एंड सी इफ पीपल हैव समथिंग टू से। एक चीज जो मुझे, दो तीन चीजें यहाँ स्ट्राइक करती हैं। एक तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हम ये देख सकते हैं, और मैंने एक्चुअली सुजातो जी का ट्रांसलेशन साथ में खोला हुआ है, और उन्होंने कई काफी शार्प ऑब्जर्वेशंस की हैं। अब जैसे बोधि के बाद जो इनके मन, भगवान बुद्ध के मन में ये विचार आता है कि भाई मैं इसको कैसे, अ, इसको किसी और को बताना कितना मुश्किल रहेगा। टू दिस venerable Sujato has this following note: up to this point, the Bodhisattva has been solely concerned with finding the answer to his quest, and only now does he think of sharing it with others. The idea that he made an aspiration for Buddhahood in the long ago past out of a desire to help all sentient beings is not supported in the early texts. So this to me is something that challenges, कम से कम जो मेरी समझ रही है, of the Buddha's history in his days as पंडित सुमेध। इसी तरह से कुछ और चीजें भी हैं, बट आई जस्ट वेट एंड see if anybody else wants to say anything else, and then we can consider other aspects जो हमने अब तक पढ़े हैं। दीपक जी, वहाँ एक स्टेंजा है जिसमें लिखा है, इट इज हार्ड टू सी द ट्रुथ। कुड यू प्लीज टेक अस देयर? इट इज हार्ड टू सी द ट्रुथ। हाँ, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। पीछे पीछे चलेंगे आप, और पीछे चलेंगे जहाँ वो कहते हैं कि निभाना वगैरह सब कुछ जो है उसमें कुछ नहीं रखा है। हाँ, ये एंड इट इज हार्ड टू सी दिस ट्रूथ, namely the stilling of all formations, the relinquishing of all acquisitions, the destruction of craving, dispassion, cessation, nibbana. So he is exactly इसका जो ट्रांसलेशन करें तो फिर ये सब कुछ खत्म, मतलब डिस्पैशन, सेसेशन एंड निब्बाना, ये सारा इकट्ठा कर दिया ना। The stillness of all formations, it is hard to see the truth, namely the stilling of all formations, the relinquishing of all acquisitions, तो समझ में आता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रेविंग भी समझ में आता है। फिर ये डिस्पैशन, सेसेशन एंड निबाना, ये भी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर। पैशन तो वैराग्य है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन, ये क्योंकि कॉमा लगा दिया ना तीनों के साथ, destruction of craving, destruction of dispassion, destruction of cessation. Does it mean this? And destruction of nibbana? no, I don't think it means मतलब destruction. ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये नहीं, कॉमास लगे हुए हैं सारे। नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रेविंग खाली इतने पार्ट पे ही आ रहा है। नहीं, वो कॉमा भी है ना सर आगे। फिर कॉमा, आगे कहीं आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। फिर डिस्पैशन, सेसेशन, निबाना, फुल स्टॉप। ये मुझे समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से ये सारे इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं, जहाँ पे भी These are all क्वालिफाई independent items. These are not connected. किया। कैसे? इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ।
naming the stilling of the formation, the relinquishing of That is existing one. That is one. अच्छा ये ओके ओके ठीक है समझ गया ऑल राइट थैंक यू Yeah. याशिका जी ने हैंड रेस करा था. याशिका जी want to. Sir, para Yashika, number just 1 minute है ना, just before you go there. So अब ये है ना, ये बड़ा standard line, बार बार we've heard it at least several, I would say several hundred times actually. And so maybe we can also encourage ourselves to try and now remember these standard ways in which the Buddha is describing the paths leading up to निर्वाण. ये एक्चुअली कल वाली उसमें भी धर साहब ने जो आखिरी स्लाइड थी उसमें एग्जैक्टली यही बताया था कि दिस इज द स्टैंडर्ड वे, सब संखार समथो, पटे निसग्गो निबिद वगैरह वगैरह. So just encouraging all of us to maybe exert ourselves a little more so that we don't have to keep going back to territory that we have ourselves covered. Yeah. Okay, Yashika, go ahead. para number 23 and 24. And I think it's a simple one or maybe a complicated question, but I don't understand. The deities tell him that Alara Kalama died 7 days ago, and then he says, and the knowledge and vision arose in me. And then I think just 1 second. इसी पार्ट का आप कह रही है ना? हाँ जी वही कह रही हूँ, मुझे बस एक चीज देखनी थी. मुझे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि why would he phrase it like knowledge and vision arose in me? That's all. I mean, किसी ने तो बता ही दिया that somebody died. तो सिंपल ही बात हो रही है, तो why phrase it like and the knowledge and the vision arose in me that he has died? It sounds like a very भारी phrasing for. तो मेरे को लगता है कि अब कुछ ज्यादा इन लाइंस में जाने की बजाय सिंपली ये जानने की बात है कि भगवान के मन में ये विचार आया और फिर भगवान ने जब अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि अलारा कलाम की डेथ हो गई है 7 दिन पहले, तो उसके बाद उन्होंने समझा कि वो किसको सिखा सकते हैं. तो नॉलेज एंड विजन को अब कि भगवान ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा या अपने डिवाइन आइज से देखा. Just keep it simple. I think it's quite simple. He's being told by somebody and then he's verifying it. है ना, क्या हाँ सही बात है. Using his अभिन्या, ये वही अभिन्या है by the way जो हमने पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले. The अभिन्या to see the fate of others. Yeah. He's translated as knowledge and vision because that's how the Pali appears. Jnanancha paname dasanang udapadi. And then that same line, ke satha kalankato alaro kalamoti. So alar kalam has passed away 7 days ago. So basically, as I understand it, he's simply verifying what the deity tells him. कि हाँ हाँ सही बात है यार, ये तो निकल गए हम. नॉलेज एंड, आपको याद है नॉलेज एंड विजन का जब हम जो लास्ट देख रहे थे सुत वास वाला, तब हमें बताया गया था कि नॉलेज एंड विजन इज यूज्ड इन मल्टीपल वेज. सो हियर it has a very straightforward simple use, which is the use of that abhinya to check what happened. At least that's how I understand it.
एक ही डायमेंशन में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लिबरेशन फ्रॉम असंख्य ज्ञान. दैट इज वन ऑफ द नॉलेज. उसमें था ना 8 ज्ञान. हमने वहां पे भी चर्चा की थी कि 8 तरह के ज्ञान जानते हैं, जान सकते हैं, जिनमें से 2 तो आनंद के नेसेसरी है, बाकी 6 ऑप्शनल है. तो सबको ज्ञान और दर्शन, बिकॉज इट इज लाइक नोइंग डायरेक्टली, सो इट्स कॉल्ड ज्ञान दर्शन. ज्ञान हमारे को जो मन में बैठा रहता है कि ज्ञान दर्शन का मतलब यही है कि उससे मुक्ति की ओर ही जा रहे हैं, बाकी चीजें उस तभी इसलिए 8 ज्ञान कहा गया था. वहां पे भी हमने चर्चा की थी कि इसको ज्ञान क्यों कह रहे हैं, इसको अभिनय क्यों नहीं कह रहे. पर बेसिकली ये एक तरह का ज्ञान ही है ना. मेरे पिछले जन्म क्या थे, दूसरे का पिछले जन्म क्या है, दूसरे का भविष्य क्या है. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ नॉलेज. ओके तो सर सॉरी शायद मेरा क्वेश्चन शायद फिर ये होगा कि I'm sorry, maybe I'm just saying really weird thing, but अगर किसी ने कोई deities आके बोल रहे हैं, I mean, if अभिनय is like some power, some kind of, तो क्या बुद्धा हर चीज को देख के वेरीफाई करते थे, हर चीज को, चाहे वो कितनी भी, like somebody comes and says that somebody died. So then does one need to, I'm right now just visualizing, closes their eyes, sees, comes back, कि मैंने देख लिया. Does it have to be verified? Is that what he is doing? I won't put it as trying to verify. It is spontaneous. The person with those capabilities, it will be spontaneously that it happens. Because उदुपाधि शब्द क्या है, ज्ञानम दर्शनम उदुपाधि, तो अराइज हो गए. तो वो मना तो नहीं कर सकते भाई क्यों अराइज हो रहा. दैट इज हिज फैकल्टी, दैट इज हिज एबिलिटी, दैट स्पॉन्टेनियसली अराइजेस. जैसे मैं उसमें पढ़ा था ना, ज्ञानम उदुपाधि, प्रज्ञा उदुपाधि, आलोको उदुपाधि, दे अरोज. He didn't put an effort. तो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में बार बार आते हैं ना शब्द, ये सत्य है, प्रथम सत्य है, फिर ये हुआ, फिर दूसरे सत्य है, फिर ये हुआ. तो अगर हम भी सोचते हैं बार बार कह क्यों रहे हैं, वो बता रहे हैं हुआ क्या. ही जस्ट गिविंग यू डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड. I see. So it's not a conscious verification. Very interesting. What you're saying is a nuance now. So ऐसे नहीं है कि उसने कहा फिर क्या अच्छा चलो मैं चेक करता हूँ. It's not like that. कहा and the same thing arises in his mind. Spontaneously it arises. Yeah, that's I can know. I see. जैसे आप कोई किसी को कहता है कि ऐसा हो गया, then you say, oh, I see. That means we say it on the basis of his saying, but actually he virtually saw it directly, because there's an ability which is in him developed to a perfect maturity. इसलिए शब्द किया उदुपाधि, it arose on its own. आप देखेंगे धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में यही शब्द आता है हर जगह, कन्या उदुपाधि, आलोको उदुपाधि, and so on. Actually, the mention of deities telling him something comes even before this, when he's in a bad state and they tell him something. So apparently it has some implication which also is somehow relevant, perhaps. That is, he had some of these abhinyanas even before becoming the Buddha. So can you please elaborate on that thought once? वो जब बेहोश हो गए थे अपनी तपस्या करते करते, तो उनके मन में जो पहले थॉट्स आए कि मैं बिल्कुल कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ सांस भी नहीं लूंगा वगैरह वगैरह, तो डीटीज ने आके बोला कि आप खाओगे नहीं तो हम आपके पोर्स में से आके कुछ डाल देंगे खाना. उनको ये डिस्क्राइब्ड है उस इंसिडेंट्स में. That means he had these abhinyas to mastered 8 jhanas. right. मतलब डेटीज का मिलना भी अभिनय है. वो
That's probably a manner of saying I don't understand that. To That's see not- that, the ability to see that they are saying so, the ability to hear that they are saying so. हो सकता है डेटी आपको भी कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं. Putting it lightly, so don't take it literally. पर धर साहब लिटरली भी तो हो सकता है ना. इट्स ट्रू ना. दैट्स व्हाट द Yeah. दिव्य श्रोत इज, दैट someone at a certain, whatever you want to call it, frequency is saying something and I just don't get it. Yeah. It's just like the typical radio transistor. You tune it to a certain frequency. That's all. तो पहले रेडियो होते थे, अब तो होते नहीं. You can tune it to different frequency and hear different radio stations. पहले होते थे शॉर्ट वेव, हॉट या लॉन्ग वेव, ऐसे कुछ होते थे ना. भूल ही गए हम भी. तो द स्टेशन इज एनीवे ट्रांसमिटिंग. मैं उसको पकड़ूं कि नहीं, वो मेरे Yeah. बल, Yeah. मेरे क्षमता पे है. That's or perhaps the knowledge exists. I mean, that's what you're saying. That somehow information is available, but whether I have the faculty to collect that information is what matters. इसी पे मुझे एक जो चीज दिखी इसमें, कि अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली सुत्तों में सभी जगह आता है, पर यहाँ पर्टिकुलरली अब हम देख सकते हैं कि जिसको भिक्खु बोधि मिस्टिकल एस्पेक्ट्स कह रहे हैं और रियलिज्म कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं ना वो. जहाँ मिस्टिकल इस तरह के अलौकिक डेटी वगैरह की बातें हैं, और रियलिज्म वो है जिसमें उन्होंने यूनिस और मनसिकार से डिपेंडेंट ओरिजिनेशन फिगर आउट किया. अगर हम देखें तो एक्चुअली दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं. So it's not that it is entirely based only on mystical aspects. It's not that it's entirely based only on realism. तो मुझे ये भी दिखता है कि मेरे लिए भी या किसी के लिए भी जो पाथ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हिंट है, एक सुझाव है कि वो दोनों डोर्स, दोनों विंडोज हमें अपने मन में भी शायद खोलनी होंगी. एंड देन द पाथ बिकम्स टू then it becomes possible for us to walk the path as is described in this sutta. So I thought another, at least for me, that message seems to come out of this. जी, to your first comment, उसके आगे क्या, मतलब आपने बोला कि आपने बोला कि Ajahn Sujata's commentary says something about the compassion wali point, the confusion. So then what is, can one I don't know. resolve it? I don't know. Well, obviously he teaches, isn't it? And that's how all the Mahakarunika business comes about. But ये बहुत, इस पे तो बहुत डिबेट हुई है ना, that how is it that अगर हम ये कह रहे हैं कि इतने लाइफ टाइम से इस प्रकार का वाव था, तो at enlightenment then he says कि अरे यार छोड़ो, है ना? How does that happen? And I don't think there is a definitive answer. I mean, we can check with Dharsab if there is some sort of definitive answer to it. But जहाँ तक मुझे पता है, it's one of those mysteries that is not resolved. Yeah, it is a mystery, but I see this mystery arising because of greater in our own minds, in especially the modern rational Western educational oriented minds. There's a tendency to give greater credence to rationality and logic and sequential proper explanation than to direct, so-called direct knowledge. क्योंकि वो डायरेक्ट नॉलेज वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है. तो कितना भी पर्सन में इवॉल्व हो जाए, वो कल्चरल इश्यू रहता ही है, उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है. एक तो ये बात है. दूसरी ये बात है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान की जो है हर चीज को हर समय बताएंगे. ऐसा नहीं है. The issue is also that certain aspects, there's a question in one of the sutras कि क्या आप, कुछ वो लोग कहते हैं they are omniscient, some person is saying, and he knows everything at every moment.
He says, no, I don't make that claim that I know everything at every moment. I have to apply effort. Then I can go with it, not otherwise. So some things are spontaneous, some things one has to apply the mind towards it. जैसे कई सत्रों में आपने देखा होगा, आनंद पूछते हैं इसका क्या हुआ, ये मर गया, कहाँ हुआ? Then he says, yes, he has gone there. Then another, then another, then another. वो कहते हैं ऐसे करते रहोगे तो मैं सारा जीवन तुम्हारे सवालों के जवाब देते रहूंगा. I will give you a criteria by which you can determine whether you are a Sotapanna or not, and so on. So the person has to, even the person with great abhinyas has to wait and apply the mind to discover what is going on there. So to me, that question about his forgetting that he is a bodhisattva and all that, and whether he was or not, or whether it was just one time affair, there's overwhelming evidence of the fact that he mentions he has had so many lives. In various sutta, he mentioned, in this life I was that. That's how Jatak Katha evolved out of one small reference. Oh, this is what has happened in the earlier also. Now, those references clearly show that in the past lives also he has matured his perfections or qualities or whatever. So I don't find any difficulty in accepting that there must have been some resolution or adhisthana that I should work in that manner. But a rationally oriented mind would expect that this should not have happened because of that. Now, to me, what it seems is that realizing the difficulty of the path, the extremely subtle nature of the teaching, we feel that we cannot be able to feel it. So it will be difficult. So it will be difficult for him. So the immediate response is that I should pause. And then somebody comes in. Now that arising of Sampati Buddha and coming and asking is also a part of the Dhamma actually. Because on that basis the instruction is made that Dhamma should be taught only when somebody requests him, not otherwise. So then there's a purpose behind this. To me it seems. The purpose behind this hesitation which Buddha expresses in terms of giving a teaching. The purpose is that there should be request made, unless you know these people directly and that you know that they're your own disciples, and so you can teach them. So at one level you can always say कि वो कहानी पे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कोई बोधिसत्व का concept है या कुछ. At other level you can say this is also a part of the law that the freshly enlightened Buddha has to be requested to teach. So, There's a सर आपने yeah, go ahead. सर आपने अभी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी कर दिया शायद. आपने कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बोल दिया. अभी आपने पहले ही मुझे बोला ना कि such was the vision and knowledge that arose in me, वो spontaneous होता है. बट अभी आपने वो आनंद वाला एग्जांपल दिया जहाँ पे आपने कहा कि he had to apply the faculty, which was also the faculty of going and seeing कि डेथ के बाद इंसान कहाँ गया. So ये it doesn't arise spontaneously. No? One has to remember who is the person. You have to tell him this person, then he has to bring in mind this person. He is telling his name. अच्छा, okay, got it. अच्छा. अलार कलाम तो उनके साथ रहा है ना. Similarly, in me it seems that if at that moment, if he had to recall his bodhisattva vow that was taken millions of years ago, that would need effort. That won't arise spontaneously. To remember that he had taken that vow of being a bodhisattva in time of Buddha's Dipankara, which was 11 Buddhas before. This must be eons and eons before it. Maybe some 50, 80, 90 eons before that time. That won't spontaneously arise. He has to apply the mind for that. So this is a spontaneous
feeling that मुश्किल होगा लोगों को समझना, काहे को परेशान हो. But then somebody requests, and he agrees very quickly. He doesn't take time to agree to his request. He doesn't say मैं सोचूंगा and फिर बताऊंगा. So very interesting. Mhm. Actually, this underlines the absence of omniscience, जो कि फिर आगे सूत्र में भी Yeah. आएगा कि नहीं यार, Yes. omniscient नहीं है मामला. Omniscience ये नहीं कि हर क्षण पे हाँ. आप सब कुछ मालूम है, नहीं, ऐसा नहीं है. So this actually is Because, an illustration of that, in fact. yeah, to me it seems that quite obviously. Hmm. Because this event has happened millions of years ago. He has to go through all his lifetimes and then see, oh yeah, this life I made that. So it's actually not that mysterious. अगर हम if we don't impose upon Buddha omniscience, then this is perfectly fine. Yeah. देखो Omniscience बोधी का of भी the एक kind footnote है. that at every moment you expect it. Can we continue our reading, sir? 10 minutes, 8 minutes. I think the only other aspect here, yeah, Surenji, I see the footnote there. Yeah. Maybe we should encourage Dharsab also to now start writing notes, because if you notice, his commentary on it is, at least to me, it's more informative. It's quite informative, let's say. Anyway, the other aspect that comes to me is also that जो धर्म को समझने के, और ये तो हमने खैर बहुत बार डिस्कस किया है, धर्म को समझने के, टीचिंग को समझने के भी कुछ प्री क्वालिफिकेशंस है. आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो दिस थिंग यहाँ पे अब निकल के आ रहा है. जैसे वो कह रहे हैं ना कि लोटसेस कुछ डूबे हुए हैं, कुछ सतह पे हैं, कुछ बाहर हैं. सो सिमिलरली ये बात यहाँ आती है कि अगर कि वो लोग उसको सीख समझ पाएंगे जिनके मन में लिटिल डस्ट है वर्सेस बहुत डस्ट है, या एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई थिंक अगेन समथिंग जो कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं, स्पेशली इन पॉपुलर टीचिंग्स, पॉपुलर डिस्कोर्स के, इट्स समथिंग that's easy to understand and so forth. So I think here that also is something that gets added on. So again, just something I thought I'll flag for us to notice. So then is it possible कि अगर dust है और आप if you keep applying yourself तो वो dust हट सकती है? Yeah, obviously, I think that's quite clear, no? It's quite clear. That's why it's a path of effort. It's just to remember that it is something that is, yeah, हम कई बार कहते हैं ना कि oh, it's all very simple, and it's fine. In a pedagogical sense, if somebody is beginning, you say it's very simple, do this, sure. As a teaching tool, it is fine. But here इस सूत्र में, I think what, at least to me, जो मैं इससे लेता हूँ कि in my own mind, I should recognize, I should remember the profundity and the subtlety, ताकि मैं भी उसी लेवल का एफर्ट लगा सकूं. This is, to me, this is the point here. Sure, you can always reduce dust, provided I follow the path, provided I'm willing to be instructed, provided I put in the ingredients that we learn about.
ये मैं अपने लिए लर्निंग ले रहा हूँ कि आई हैव टू गेट टू द पॉइंट वेयर देयर इज लिटिल डस्ट, तब जाके टीचिंग मेरे में परकोलेट होने की संभावना है. Teaching includes methods of reducing dust. बट इफ आई हैव द मिसकंसेप्शन कि हाँ हाँ बहुत सिंपल है, ये कर लो वो कर लो मत करो देखते रहो ना, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट that were there in Mr. Dhahar's presentation yesterday, then that's a trap. That's the point. कहीं ना कहीं महापन्य जी जो आपने कहा है, इज इट नॉट ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन based on our kammas we have been doing in the past? It is a gradual evolution कि हमने पानी के लोटस ने पानी के नीचे रहना है या धीरे धीरे ऊपर निकलना है. इट इज ऑल्सो टू ए लार्ज एक्सटेंट जो आज हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, इट इज बेस्ड ऑन कम्मास वी हैव बीन डूइंग. तो कम्मास हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, पास्ट कम्मा जो है हमारे फ्यूचर कोर्स को डिसाइड करने के लिए. हाँ, जैसे कि हमने कई बार सूरी साहब डिस्कस किया है ना, पास्ट कम्माज मेरे वर्तमान की परिस्थितियां मुझे देते हैं. जी उन परिस्थितियों में क्या करता या करती हूँ वो मेरे वर्तमान की एफर्ट, मोटिवेशन, चेतना, संवेग पे डिपेंड करता है. जी जी वो तो सब. दैट इज द पॉइंट टू मी, दैट इज द लर्निंग हियर कि यार मैं पास्ट कर्म है या हो जाएगा, है ना, मैं इन सब में मैं अपने लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ. एंड देन आई एम एनकरेजिंग ऑल ऑफ अस टू डायरेक्ट दैट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स. हम पहचाने कि इवन फॉर एन एनलाइटन पर्सन ये टीचिंग ऐसी है कि उनको सबसे पहला विचार तो ये आता है कि अरे यार छोड़ो. तो दैट टू मी अंडरलाइंस कि ये कितना हम किस गंभीरता की बात कर रहे हैं. तो मेरे में भी उस प्रकार की गंभीरता आए. दैट्स द पॉइंट. So to me, this is a way of evoking samveg, evoking energy. नहीं बिल्कुल ठीक है. हम लोग उस हिसाब से बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये टीचिंग मिल रही है घर में बैठे बैठे, विदाउट विदाउट मच फिजिकल एफर्ट. हमें घर बैठे हमें मिल रहा है. आई विल से इट्स सॉर्ट ऑफ इन अ वे इट इज स्पून फीड टू. आई फील इफ एट ऑल आई एम परमिटेड टू यूज दिस वर्ड, दैट्स वेरी वेरी गुड एंड वी आर फॉर्चुनेट. लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं. Maybe our kammas have been like that we have got such a wonderful exposure. और Yeah, हमारे see, ग्रुप में जितने लोग हैं, हमारा जो एसिमिलेशन का लेवल भी अलग अलग है बेस्ड ऑन आवर पास्ट कमर्स. आई थिंक सो. yeah, I'll push this point a little, ठीक है ना, with your permission. एक तो ये कि even the fact that जब मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ, does my mind go off into tangents के औरों का क्या है, ऐसे लोग हैं, या I can let it go there or I can bring it back to myself. कि मुझे स्पून फीड हो रहा है, अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ. जी जी दैट्स हाउ आई सी इट. कि अगर मेरा मन इन विचारों में जाता है, ये ऐसे हो जाए, लोगों को मिले, लोग ऐसे हैं, कैन, बट टू मी that's also a, to put it slightly bluntly, that's also a it's dispersing the actual thing that I should be doing. What I should be checking is कि यार मुझे स्पून फीड हो रही है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स अ ग्रेट सिमिली. मैं उसका क्या कर रहा हूँ. am I really taking it in or I'm saying नहीं नहीं पता नहीं मैं देख लेता हूँ, ये नहीं वो नहीं, am I kind of directly or indirectly refusing to be spoon fed. That's the question I ask myself. So I'm encouraging all of us to ask that to ourselves rather than allowing our mind to hello. That's the point. थैंक यू.
So there are no more issues. Conclusion. So शाम को it's likely we may again hear either all of or part of जो हमने कल सुना था, what is practice वाली बात. So it's likely that we may re-listen to it because there have been many sort of suggestions कि उसको हम कुछ समय चलाएं दोबारा से. So it's likely what we'll do in the evening. Okay, very good. So हम ऐसा एस्पिरेशन बनाएं कि भाई जब स्पून्स हमारे सामने आए तो हम उसको पूरी तरीके से या जितना भी हो सके उतना धारण करें, ग्रहण करें, and maybe not turn the spoon away through force of our habits. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Smakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savak Sangho Sanghang Namami. हम बटो 3 बार अपने प्रणाम समर्पित करते हैं. हम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम. Thank you. Just as we were doing the 3 balls, मुझे ये इमेजरी आई कि कहीं मेरे को स्पून मिल रही है, मैं ये तो नहीं कर रहा कि दूसरों की स्पून देख रहा हूँ और मेरी स्पून को मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं ऐसी स्पून नहीं वैसी स्पून में डाल दो, ऐसा तो नहीं हो रहा है. सो जस्ट समथिंग फॉर अस टू थिंक अबाउट. थैंक यू. सी यू इन द इवनिंग. Thank you. You